Good morning, students. It's me, Miss SANIA, and today we are back with another lesson. As you all know that we have completed part 1 of tenses in the previous lecture, so today I am taking a start with tenses part 2. In the previous lecture, we have already completed present tense, and I've already told you the reason as well that why we are taking a start with present tense, and now why are we doing the second part with the past tense, right? Because we always speak about the present situation and then we interlink the present situation with the past. So hurry up, grab your notebook along with pencil and pen and start noting the important pointers. And yes, you're already familiar with the other guidelines. So moving forward, the content which we are going to study today in past tense is introduction, in which we are going to discuss about the definition of past tense, and then in the next thing we are going to discuss about the classification of past tense, then what exactly past tense is and what other elements are coming up into past tense. Then we will always or then we are already going to discuss about the rules of past tense, that what are the rules and where it should be implemented. And then the last one, the list of examples, and yes, the exercise. Now, I will try to keep the lecture mix and mash up for all of you so that it should be understood by all of you that what exactly the content is or what exactly I am trying to say. Starting with the definition of past tense. The past tense is a grammatical tense whose function is to place an action or situation in the past. पास्ट टेंस का मतलब होता है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं which have already occurred in the past, जो चीज़ पास्ट में हो चुकी हो, आप उसको इंटरलिंक करके आगे चल रहे हैं, ठीक है? In languages which have a past tense, it thus provides a grammatical means of indicating that the event being referred to took place in the past. आप उस event से उस चीज़ को इंटरलिंक करते हैं और इंटरलिंक करके बताते हैं कि हाँ ये चीज़ आपके past में जो थी वो हो चुकी है. Now you can see there is a picture which I have given on the right side, the clock. Clock always indicates about the timings, the situation, because whenever you're speaking about some situation, so you just say that at 5 o'clock this thing happened, at 6 a.m. this thing happened. So this is why clock basically indicates about the present, about the past, and about future. Now, coming towards the next slide, simple past tense. या मैं इसको simple past tense कहूँ या फिर मैं इसको कहूँ indefinite past tense, तो वो दोनों चीज़ें जो है वो बिल्कुल same हैं. Now, there is a situation which is given. A girl, she is like shocked on what exactly just happened, and there is an accident which have occurred over here. When the girl will tell this action to someone else, तो automatically आपकी जो statement है वो आपकी past tense में चली जाएगी. क्यों? क्योंकि आपके सामने एक action हुआ, ये present action है, लेकिन जब वो किसी को उसी चीज़ को communicate करेगी, that would be the past action. Remember one thing, अगर किसी action को एक second भी गुजर चुका हो और आप उस action को किसी दूसरे इंसान को बता रहे हैं, तो वो एक second का भी action आपका past tense में count होगा, ठीक है? Now coming with the definition of past indefinite tense. The past indefinite tense, also known as simple past tense, is used to indicate a finished or completed action, task that occurred, happened at a specific point in the time in the past. Past indefinite tense का मतलब होता है, उसको हम simple past tense भी कहते हैं. इसका मतलब है कि आपके past में एक action start हुआ और वही एक्शन आपके पास्ट में अकर होने के बाद खत्म हो गया एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर पहुंचकर. ये चीज आपकी कहलाती है पास्ट टेंस. अ स्पेसिफिक टाइम, किसी स्पेसिफिक खुसूसी टाइम के ऊपर वही चीज शुरू हो खत्म होना. Can be diverse and can cover a long period of time, but it cannot be undeterminable. अनडिटर्मिनेबल का मतलब होता है आप उस टाइम को डिटर्मिन नहीं कर पाए, लेकिन ये चीज़ है कि आपका एक लॉन्ग टाइम पीरियड में वो आपका स्पेसिफिक एक्शन कंप्लीट हो रहा है. फॉर एग्जांपल मैं अगर ये चीज़ बोलूँ कि मैंने जो है वो चावल पकाना है, ठीक है, चावल पकाने के लिए मैंने जो है आई वाज कुकिंग राइस,
बट सडनली फॉर एग्जाम्पल अगर उसमें कोई ऐसा एक्शन हो जाता है जिसकी वजह से वो चावल जल जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली इट विल टेक मोर टाइम फॉर द एक्शन टू बी कंप्लीटेड. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड. शी रेड द बुक लास्ट संडे. उसने लास्ट संडे को एक बुक पढ़ी. एक्शन स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड इन पास्ट. सो यू कैन सी यहाँ के ऊपर आपका एक्शन स्टार्ट भी हुआ है और पास्ट में आपका एक्शन कंप्लीट भी हो गया है. दिस इज द बुक. नाउ दिस इज द टाइमलाइन ऑफ पास्ट नाउ व्हिच मींस प्रेजेंट एंड फ्यूचर. टाइमलाइन पास्ट में ही आपका एक्शन स्टार्ट हुआ एंड पास्ट में ही आपका एक्शन कंप्लीट हो गया. When I say that she has completed the book in the past, then it doesn't mean that she has completed the book in a single day. Obviously उसने book पढ़नी शुरू की है तो फिर last Sunday जाकर उसकी book complete हुई है. Now English has two types of verbs in the past tense. English के दो words होते हैं past tense में. You're already familiar with verbs. Verbs basically means an action which is performed that is known as verbs. Number one, verbs are of two types, or you can say that they're classified into two types. One is the regular verbs and the other one is the irregular verbs. Do you know about regular and irregular verbs in the past? Well, if you're not familiar with regular and irregular, then definitely I'm going to tell you in these slides. Now, starting with the most regular important verb, which is used the most whenever we are speaking about tenses. Most verbs are regular verbs. Regular verbs are those whose past tense and past participle are formed by adding a, d or an ed. For example, like जो आपके रेगुलर वर्ब्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स आपके वो वाले वर्ब्स होते हैं जो पास्ट पार्टिसिपल यानी सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस बनाते हैंगे. या तो आप उसमें डी ऐड करो या फिर आप उसमें ed ऐड करो to the end of the verb. At the end of the verb, you're adding it and then you're completing it. To roll is a good example of a regular verb. Roll good example है किस तरीके से आपका L के ऊपर जो है वो मतलब रोल था. ठीक है, आपने क्या किया, ed लगा दिया तो फिर यहाँ के ऊपर आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है एक्शन. ठीक है. Now add ed. How? Now consider that there is no ed. Just consider the word till d. It's ending on d, right? Need. Need मतलब किसी की जरूरत. What we did is हमने यहाँ के ऊपर ed add किया and then the word is completed. Post, posted. Shout, shouted. Talk, talked. Walk, walked. Play, played. Ask, asked. Now there is another example which is given over here. In few of the words we'll add ed and in some of the words we'll add d. अब यहाँ के ऊपर ऑलरेडी ई गिवन है. जहाँ के ऊपर आपका सेंटेंस ई के ऊपर ऐड हो रहा है वहाँ के ऊपर सिर्फ डी लगेगा. जहाँ के ऊपर आपके सेंटेंस में ई नहीं आ रहा है तो वहाँ के ऊपर आप ई डी को लगाएंगे. अब जैसे यहाँ पर देखें ये ई के ऊपर एन नहीं हो रहा था इसीलिए हमने ई डी लगाया. डिफरेंस दोनों में यही होता है क्योंकि ये ई के ऊपर एंड हो रहा था तो इसको रेगुलर वर्ब बनाने के लिए हमने यहाँ के ऊपर डी लगा दिया. फर्स्ट द word was move and then this word was known as moved. First the word was love and then after adding d now it sounds with loved. Close, closed. Dance, danced. Arrive and arrived. Now there are other couple of examples as well which are given over here. Talk, talked. Talk means present tense and then after adding ed now is the past tense. Laugh, laughed. Pull, pulled. Travel, traveled. Watch, watched. Cook and cooked. All right. Moving towards the next one. Now we'll discuss further more about the ed and the endings. Most verbs add ed start, which makes ed after adding obeyed. Now there is a question which comes over here कि मैंने जो पुराना आप लोगों को अभी पढ़ाया है
हाउ एम आई डिटर्मिनिंग दिस थिंग कि ed कहाँ आएगा या फिर d कहाँ पर आएगा. Words which end in a consonant e add d, lift and lift, which I've already explained you in the previous one as well, कि जो आपका कॉन्सोनेंट के ऊपर ऐड हो रहा है. कॉन्सोनेंट का मतलब होता है जो बेसिकली आपका ई के ऊपर ऐड हो रहा है, वहां पर हमेशा सिर्फ डी लगेगा. ठीक है. Words that have one syllabus and end in a single vowel, जहां के ऊपर आपका एंडिंग जो है वो सिंगल वावल के ऊपर है प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट, या फिर सिंगल कॉन्सोनेंट के ऊपर डबल द कॉन्सोनेंट एंड ऐड ईडी. वहां के ऊपर आप कॉन्सोनेंट को डबल करके ईडी ऐड कर देते हो. किस तरीके से? देखो यहाँ के ऊपर एग्जांपल देखो. यहाँ के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सोनेंट यहाँ के ऊपर आपका वावल तो बीच में है लेकिन एंडिंग में नहीं है. ठीक है. और यहाँ के ऊपर आपका कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इसी वजह से हमने इसको टॉक्ट कर दिया. ठीक है. कमिंग टुवर्ड्स द एक्सेप्शंस, verbs ending in w or x do not double the consonant. जो आपके words w या x के ऊपर end हो रहे होते हैं वो consonant को double नहीं करते. consonant means the last word, that is this. talk का ये जो है वो k के ऊपर end हो रहा था अगर हम ed याद नहीं करते. ठीक है. do not double the consonant fixed short, वो fixed होता है, वो consonant add नहीं होता. Verb with two ending in a vowel plus a consonant with stress on the last, double the final consonant preferred. ठीक है. अब आप देखें कि जहाँ के ऊपर आपके दो वावल्स हों या फिर जहाँ के ऊपर आपका एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ के ऊपर आपका फाइनल एक ही कॉन्सोनेंट ऐड होता है. Verb with दो टू यानी कि जो अगर आपका लेट्स सपोज दो के ऊपर एंड हो रहा है तो वो उस चीज को डबल कर देगा. किस तरीके से? यहाँ के ऊपर अगर मैं एग्जांपल लूँ एल की, ये दो कॉन्सोनेंट यहाँ के ऊपर थे. ठीक है. ट्रैवल, ट्रैवल का आपका जो है वो सिंपल था, लेकिन जब हम इसको करेंगे क्योंकि यहाँ के ऊपर आपका वर्ब जो है वो सिंगल कॉन्सोनेंट के ऊपर था तो हम यहाँ के ऊपर ट्रैवल में इसको इस तरीके से करके कंप्लीट कर देंगे. ठीक है. Verbs ending in a consonant plus y, change y to I and add ed. किस तरीके से? y के ऊपर था, y को हटाकर we have placed I and then ed, that's worried. Verb in I add d, tied. अगर I e के ऊपर end हो रहा है तो आप सिर्फ d लगाओगे क्योंकि ऑलरेडी e यहाँ के ऊपर given है, and then tied or died. ठीक है. Now coming towards the next one, that is irregular verbs. Irregular verbs are common verbs in English language that do not follow the simple system of adding d or ed. जब हम लोग irregular verbs की बात करते हैं तो irregular verbs का मतलब होता है कि irregular verbs में basically हम ना तो e लगाएंगे, ठीक है, सॉरी ना तो हम d लगाएंगे ना फिर ed लगाएंगे. सही है. To end, all right, to end to the end of the verb of form the phase tense. ठीक है. अब यहाँ के ऊपर हम क्या करते हैं, हम ना ही तो d लगाएंगे यहाँ और ना ही तो हम ed लगाएंगे आपके सेंटेंस को या फिर आपके वर्ड को कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. That means the spelling can be a little tricky. इसका मतलब ये है कि स्पेलिंग बहुत ज़्यादा आपकी ट्रिकी भी हो सकती है. Right? Some irregular verbs follow patterns. कुछ irregular verbs ऐसे भी होते हैं जो कि आपके पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जैसे कि ड्रिंक है. ड्रिंक को हमें इरेगुलर वर्ब बनाने के लिए ना हमें यहाँ पर डी ऐड करना है ना ही हमें यहाँ के ऊपर ईडी ऐड करना है. ठीक है. इसको इरेगुलर बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ करेंगे कि हम ड्रिंक का सेकंड फॉर्म आ जाएगी, दैट इज ड्रैंक. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्प्रिंग. स्प्रिंग को हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब में लेकर चले जाएंगे तो फिर ये हो जाएगा स्प्रैंग. इरेगुलर वर्ब्स में एंड रेगुलर वर्ब्स में यही डिफरेंस होता है. नो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, न्यू आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. राइट. ब्लो किसी चीज को फुलाना, ब्लो आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ब्लू आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. बट वी कांट यूज दोस पैटर्न्स विद प्रेडिक्टेबिलिटी. लेकिन हाँ, देयर इज वन मोर थिंग, आप हर चीज में प्रेडिक्टेबिलिटी के साथ उसको नहीं कर सकते. आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा वर्ड चेंज होकर सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा
ये सेकंड फॉर्म में ही रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस स्ट्रक्चर. Unfortunately, learning irregular verbs means memorization. Unfortunately, learning irregular verbs means you have to memorize them. आपने sentence में उसको रखते हुए देखना है कि कौन सा form of verb किस जगह के ऊपर lie करेगा. ठीक है. Now coming towards the next one, irregular verbs are verbs that do not end in ed. Irregular verbs, as I've already mentioned, कि उसमें ना तो वो e के ऊपर end होते हैं, ना ही वो ed के ऊपर end होता है. ठीक है. Sometimes with irregular past tense verb, you have to change the vowel to make the word past tense. अक्सर ऐसा होता है कि आपको उसका vowel यानी कि अगर उसके ऊपर end हो रहा हो तो उसको आपको change करना पड़ता है ताकि आप उसी सेम चीज को word को past tense में complete कर सके. Let's suppose with the word become. Become आपका first form of verb है, ठीक है, and then became will be the second form of verb. Then coming towards the next one, give आपका second form में आके gave हो जाएगा. मीनिंग दोनों की सेम है. give ये भी है, यही मतलब है कि आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि आप सेंटेंस की फॉर्मेशन के हिसाब से उसको चेंज करेंगे. ठीक है. Alright. Drive is the first form of verb. ठीक है. And then drove is the second form of verb. Forget is the first form of verb. And then forgot is basically the second form of verb. All right. Now, other irregular verbs have a different kind of change. जो दूसरे irregular verbs होते हैं, उनका different kind of change होता है. ठीक है. You need to memorize these. और आपको उनकी sentence structure के हिसाब से उसको memorize करना होता है. ठीक है. अच्छा, जैसे कि लेट्स सपोज टीच है. टीच आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया. ठीक है. एंड देन आपका टॉट जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. ब्रिंक आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड देन ब्रॉट आपका यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. लीव विल बी द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन लेफ्ट आपका जो है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. ठीक है. उसके बाद फिर आपका जो है हेयर इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब and then heard आपका जो है वो second form of verb है. Similarly, buy is the first form of verb and then bought आपका second form of verb है. Now, there are few couple of exercises which are given over here. I hope कि आपका regular and irregular are pretty much clear to you. Still, if you people are having any questions, so wherever we are connected, you can ask me over there, right? These are two exercises which you have to do. In the first exercise, you have to put the verb into the simple past. In the second exercise, you have to put the sentences into simple past. यानी कि एक sentence है, आपको उसको simple past में रखते हुए complete करना है. Third, write sentences in simple past. ठीक है. आपको इसको form करके इसकी formation को इसकी formation को simple past में करके लिखना है. And then the fourth one, आपको choose करना है कि इनमें से was या were कहाँ के ऊपर आएगा. Now coming with the definition of simple past tense. We form affirmative statements in the simple past with affirmative means simple statements. ठीक है. In the simple past with the subject and the past form of verb. अब जब हमें affirmative statements को complete करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको past form में या फिर उसके साथ verb लगा के complete करते हैं. जैसे कि I finished my homework after lunch. Regular verb आ गया, ed आया है. ठीक है. finished past tense हो गया, I subject हो गया, past tense ये verb हो गया which means regular verb. ठीक है. my homework आपका object हो गया. after lunch भी आपका object में आ गया and then after will be the preposition. ठीक है. my यहाँ के पर आपका यानी कि उसने अपना काम complete कर लिया है. ठीक है. now I ate a sandwich for lunch. मैंने sandwich खाया lunch के लिए. ये बेसिकली ईट था. ईट को हमने एट में चेंज किया. ईट आपका सिंपल फॉर्म हो गया. उसके बाद फिर आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो एट हो गया. ठीक है. ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इज एट. मैंने जैसे कि आपको बताया कि सेंटेंस की फॉर्मेशन के हिसाब से यू हैव टू डिसाइड कि कौन सी चीज कहाँ पर फॉल करेगी. ठीक है. नाउ we form the past form of regular verb with d, ed, which I've already explained you in the previous slide. Irregular verbs form their past forms in different ways. Different ways में वो past form को form करते हैं. We use the auxiliary verb did to form negative statements.
हम ऑक्सिलरी वर्ब डिड को यूज करते हैं अपनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को फॉर्म करने के लिए, क्वेश्चंस के लिए एंड शॉर्ट आंसर्स के लिए। जैसे कि वी डिडंट लाइक द फिल्म लास्ट नाइट, डिडंट मीन्स डिड नॉट। डिड यू हेयर द न्यूज, क्या तुमने न्यूज सुनी? यस आई डिड। ऑलराइट, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को आप किस तरीके से यूज करेंगे? To describe an action that happened at a definite time in the past. कोई भी चीज जो कि एक एक्यूरेट टाइम के ऊपर पास्ट में हुई हो, उसमें सिंपल पास्ट टेंस यूज किया जाता है। जैसे कि आई ट्रैवल टू पेरिस इन 1985, मैंने ट्रैवल किया था पेरिस में 1985 में। टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट इंटरप्टेड अनदर एक्शन, किसी ऐसे एक्शन की बात करना जो कि दूसरा एक्शन को इंटरप्ट करे, दैट वाज इन प्रोग्रेस इन द पास्ट, जो कि आपका पास्ट में ऑलरेडी एक ऑनगोइंग चीज थी जो कि चल रही थी। ठीक है, आई वॉज स्टडीइंग व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ, मैं जब पढ़ रही थी तब लाइट जो है वो चली गई, इंटरप्ट हुआ। क्यों? एक एक्शन था which she was performing and then the action got interrupted with the disturbance of electricity. To talk about action that happened in a sequence in the past, किसी ऐसे एक्शन की बात करना जो एक सीक्वेंस में चलता आ रहा हो। I came home, picked up my laptop and left. मैं घर आई, पिकअप किया लैपटॉप एंड लेफ्ट। अक्सर बच्चों को दिया जाता है ऐसे लिखने के लिए कि आपने अपने डेली रूटीन के बारे में ऐसे लिखना है, या फिर यू हैव टू टेल अबाउट द डेली रूटीन। फिर जब बच्चा अपने डेली रूटीन के बारे में बता रहा होता है या फिर पूछा जाता है अच्छा पूरे दिन संडे को क्या किया, लेट्स सपोज, तो वो जितनी भी चीजें बताएगा वो एक सीरीज वाला एक्शन होगा which the other person will tell you. All right. Coming towards the next one, to narrate the main actions and events in a story. किसी भी पास्ट में जो एक्शन हो चुका हो उसको नरेट करना, या फिर जो पास्ट में आपके इवेंट्स हो चुके हो उसको नरेट करना स्टोरी फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि आपको एक स्टोरी बोलने के लिए बोला गया है कि ओके फाइन, जस्ट शेयर योर स्टोरी विद अस। देन इट वाज गेटिंग डार्क, I was walking down the road when I saw a strange man. अब बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी जब मैं रोड के यानी कि रोड की तरफ से नीचे आ रहा था। I saw a strange man over there. तो ये पूरी एक सीरीज ऑफ सीक्वेंस है जो कि बताई जा रही है, यानी नरेट कर रहे हो आप, दैट इज नोन एज नरेशन। इफ यू आर टेलिंग समथिंग इन सीक्वेंस तो वो इस तरीके से होगा, नरेशन विल बी दैट वे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, वो टाइम एक्सप्रेशन सच एज, जो भी आपका टाइम एक्सप्रेशन हो, जैसे कि yesterday, last night, 4 days ago in 2004, डिफरेंट एक्सप्रेशंस आएंगे। ठीक है, तो इसमें भी आप पास्ट टेंस को ही रिलेट करते हुए इसको बताते हो। ठीक है, आई सॉ अ ग्रेट फिल्म लास्ट नाइट, मैंने एक बहुत ग्रेट फिल्म देखी है लास्ट नाइट। विथ स्टेटिव वर्ब्स, स्टेटिव वर्ब्स के साथ भी आप यूज करते हो। आई हैड एन एग्जाम yesterday, आपका एग्जाम, मेरा एग्जाम था yesterday मतलब कल। ठीक है, अच्छा, सिंपल पास्ट फॉर्म। ठीक है, सिंपल पास्ट फॉर्म आपकी 4 पास्ट फॉर्म्स होती हैं। एक आपकी अफर्मेटिव होती है, सिंपल पास्ट फॉर्म एक ही फॉर्म होती है, लेकिन फर्दर जो क्लासिफाइड होती है उसको हम 4 डिफरेंट उसमें करते हैं क्लासिफिकेशन। पहली आपकी अफर्मेटिव होती है, देन नेगेटिव, देन आपके यस और नो क्वेश्चन फॉर्म, एंड देन क्वेश्चन फॉर्म को या तो शॉर्ट आंसर्स किस तरीके से लिखते हैंगे तो वो इसी का पार्ट ही होती है। एंड देन द फोर्थ वन दैट इज WH, यानी कि W, who, what, when, where and why। ठीक है, तो जो क्वेश्चन फॉर्म होती है वो आपकी लास्ट। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस व्हिच मींस द सिंपल सेंटेंस, उसमें आपका जो फार्मूला होता है, अगर आप ये फार्मूले को याद नहीं करना है, समझना है, अगर आप इन फार्मूलाज को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। ठीक है, नंबर 2, रेगुलर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नंबर 2 जैसे कि आपका रेगुलर डी एंड ईडी व्हिच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, या फिर इसमें इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हैव टू बी मेमोराइज्ड, यानी कि अफर्मेटिव जो आपका सेंटेंस होता है उसमें 3 चीजें हैं जिसको आपका ख्याल रखना होता है। इसका बेसिकली जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है यानी कि जो फॉर्मूला है वो बेसिकली होता ही है, आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ आपका पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आता है। कमिंग टुवर्ड्स द एग्जांपल, I liked football when I was young.
मुझे फुटबॉल बहुत पसंद थी व्हेन आई वाज यंग। शी नेवर लाइक्ड फुटबॉल, उसने कभी भी फुटबॉल को लाइक नहीं किया। ठीक है, अब यहाँ के ऊपर ईडी को हमने रेगुलर वर्ब को ऐड करते हुए अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया। आई यहाँ पर सब्जेक्ट था, वर्ब के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब ईडी था। इसको हेल्पिंग वर्ब कहो या फिर इसको रेगुलर वर्ब कहो, एक ही बात है। ठीक है, फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग, आई यहाँ के ऊपर आपका जो है वो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, व्हेन आपका यहाँ के ऊपर आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी बता दिया कि किस तरीके से था। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब ये है कि आप किसी चीज को रिजेक्ट करो या मना करो तो वो चीज आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाती है, जिसका फॉर्मूला ये होता है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब को डिड नॉट या फिर डिडंट, दोनों में से कुछ भी, अगर आप ऐसे बोलेंगे तब भी ठीक है, अगर आप ऐसे बोलेंगे तब भी ठीक है। उसके साथ फिर आपका बेस वर्ब होता है। बेस वर्ब यानी कि फर्दर उसको किस तरीके से आपने कंप्लीट करना है। एक्सेप्ट नेगेटिव ऑफ बी इज wasn't और weren't। बी का नेगेटिव जो होता है वो wasn't या फिर weren't होता है। ठीक है, एंड देन सब्जेक्ट प्लस was not और were not प्लस नो बेस वर्ब। लेकिन जब हम लोग was not या फिर were not को यूज करते हैं तो हम बेस वर्ब को यूज नहीं करते। किस तरीके से? कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट वन, दैट इज सब्जेक्ट। टॉम didn't like that movie, टॉम को वो मूवी पसंद नहीं आई, ये आपका हो गया सब्जेक्ट। ये वाला जो आपका हो गया ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जो कि हमने यहाँ के ऊपर यूज किया है क्योंकि ये एक एक्शन बता रहा है। देन आपका आ जाता है बेस वर्ब। बेस वर्ब को हमने रेगुलर वर्ब में चेंज नहीं किया क्योंकि यहाँ के ऊपर नीड नहीं थी। ठीक है, एंड देन दैट मूवी, टॉम didn't like that movie। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी सेंटेंस नेगेटिव में होगा जो कि हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके साथ हमेशा आप बेस वर्ब को यूज करेंगे जिसके अंदर आपका रेगुलर वर्ब नहीं आता और सेंटेंस आपका सिंपल रहेगा। ठीक है, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन जो कि नेगेटिव था। नेगेटिव में वो हमसे बोल रहे थे कि सब्जेक्ट के साथ आप was not लगा दो या were not लगा दो, लेकिन इसमें बेस वर्ब नहीं आता। सो यू कैन सी वेरी क्लियरली कि he wasn't happy with the ending, वो एंडिंग से खुश नहीं था। ठीक है, wasn't। अब यहाँ के ऊपर weren't happy नहीं लगा सकते थे। were को हमेशा हम सिंगुलर के साथ ही यूज करते हैं, प्लूरल के साथ यूज करते हैं। आप देख सकते हो कि he सिंगुलर है, वो प्लूरल नहीं है। प्लूरल मीन्स एक से ज्यादा की बात करना। ठीक है, इसी वजह से हमने he के साथ wasn't लगाया। wasn't का फुल फॉर्म होता है was not। Coming towards the next one, yes and no questions, जिसमें did के साथ आपका subject आता है and then आपका base verb आता है। Coming towards the example, did क्यों आता है? क्योंकि आप सवालिया अंदाज में स्टार्ट कर रहे हैं, इसी वजह से हमेशा आप जो है वो helping verb को पहले रखते हैं। ठीक है, did you hear the sirens? क्या आपने sirens सुनी है? did से आपने स्टार्ट किया था क्योंकि क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन के एंड में हमेशा जो है वो आपका question mark आएगा। Now remember one more thing, everyone, those who are listening to me, हमेशा याद रखना कि सेंटेंस का स्टार्ट कैपिटल होता है हमेशा, भले वो कॉम्प्रीहेंशन हो, कॉम्पोजिशन हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, आपका सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। और आपका सेंटेंस अगर आपका सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस है तो वो फुल स्टॉप के ऊपर एंड होगा, बट अगर आप किसी से कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो वो आपका क्वेश्चन मार्क के ऊपर एंड होता है। ठीक है, अच्छा, did you hear the sirens? Sui go to the concert, क्या Sui concert गई थी? ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जो है ये irregular है। ठीक है, irregular क्यों है? क्योंकि कोई base verb नहीं है। अच्छा, base verb नहीं है, यहाँ के ऊपर सिंपल सा आपका verb है, here action हो रहा है, go action हो रहा है, ना आपको regular verb यहाँ दिख रहा है ना आपको irregular verb यहाँ के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, coming towards the next one, short answers to yes or no questions, short answers। ठीक है, किस तरीके से pronoun आता है? pronoun subject होता है आपका and उसके साथ आप did या फिर did not यूज करते हो। ठीक है, now coming towards this example, the first one, yes I did, no I didn't, मैंने जो है वो काम कर लिया या फिर मैंने काम नहीं किया। yes आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, no I didn't नेगेटिव स्टेटमेंट है।
yes she did, yes उसने कर लिया पॉजिटिव स्टेटमेंट, no she didn't यानी कि no उसने नहीं किया नेगेटिव स्टेटमेंट. Coming towards the next one, WH questions. When we are talking about WH questions, then it means that WH word as subject plus past form of verb. WH questions में आपका पहले क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट के साथ, फिर आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. किस तरीके से? Who watched TV last night? TV last night किसने देखा है? क्योंकि ये आपकी क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट थी, इसीलिए हमने एंड में आपका क्वेश्चन मार्क ऐड किया है. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, WH word is not subject. WH word आपका सब्जेक्ट नहीं है, इसके साथ did है and then subject plus base verb. What did you watch? तुमने क्या देखा है? And then question mark. This is how exactly this thing is completed. ठीक है? Now coming towards the next one. Example of WH word interrogative sentences. Example क्या है? There are a couple of examples which are given over here. इनमें से आप कोई सा भी ले. Let's suppose अगर मैं लूँ that let's suppose that what did you watch on TV? यहाँ के ऊपर preposition लगाना जरूरी है just to complete this in between. ठीक है, एक मैंने example देके complete कर लिया कि आप किस तरीके से interrogative sentences में यानी W, watch, when, where and why के साथ इसको complete करते हो. ठीक है, past simple. एक और चीज यहाँ के ऊपर एज एन एग्जाम्पल एक और फॉर्मूला दिया है, लेकिन ये वही सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी मैं पास्ट साइड्स में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. यहाँ के ऊपर जस्ट रेफरेंस के लिए मैंने एक और चार्ट दिया है कि अगर आप इससे गो थ्रू खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये वही सारी चीजें हैं विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन. बट इनमें से एक चीज है जो कि मैं बताऊंगी कि देखें, आई, यू, ही, वी, यू एंड दे, इन तमाम चीजों के साथ हमेशा आपका, जैसे आई के साथ हमेशा आपका वर्ड लगता है. ठीक है, यू के साथ आप हमेशा वर्ड लगाओगे, यानी कि आई, ही. ठीक है, आई, ही, मी, सॉरी आई एंड ही के साथ हमेशा आपका वर्ड आएगा, एंड बाकी यू, वी एंड दे के साथ हमेशा जो है वो आपका वर्ड आएगा. ठीक है, ये चीज आपने जो है वो बेसिकली अपने दिमाग में रखनी है हमेशा. नाउ past simple, there is another reflection which is given over here. If you go through this, so it is just the same which I've already explained to you. Now the simple past tense, it's just a formula which is given over here. Walk, regular verb में walked हो जाएगा, and then eat आपका irregular verb में ate हो जाएगा. I ate the food. He walked with me. There is another example which is given over here. I did a lot of things. I went out and I danced during hours. I also played cards. So this is another example of simple past tense, and in this example you can see very clearly that the story is being narrated. The story is being told in a sequence. So this is the use, that where and how will you use simple past tense. You always have fun, don't you? So what did you do yesterday? Now you can see yesterday हमेशा past tense के लिए यूज किया जाता है, यानी कि एक दिन पहले. ठीक है, आपने देखा कि उसने सवालिया अंदाज में, यानी कि ये इंटेरोगेटिव फॉर्म थी सिंपल पास्ट टेंस की, कि इंटेरोगेटिव फॉर्म में उसने अपने सवाल को किस तरीके से पूछा है. There is another example of simple past tense which is given over here. Okay, sorry, I think ये थोड़ा सा यहाँ से कट गया. Anyways, just leave this example. Focus on the next one. You got up at noon. तुम नून के ऊपर यानी कि शाम में उठे हो. You didn't get up at 10. तुम सुबह नहीं उठे. इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, यहाँ के ऊपर आपका सिंपल स्टेटमेंट है जो कि आपने बोली है. ठीक है, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है. नाउ he went to the museum, अफर्मेटिव स्टेटमेंट है. He didn't go to the library, ये आपकी आ गई है क्वेश्चन, ये आपकी आ गई है नेगेटिव स्टेटमेंट. ठीक है, अच्छा, you came home late, तुम लेट आए हो घर पे. You didn't come home early, तुम जल्दी नहीं आए. पहली स्टेटमेंट अफर्मेटिव हो गई एंड सेकंड स्टेटमेंट आपकी didn't come वाली हो गई आपकी नेगेटिव स्टेटमेंट. They had a picnic, उनकी पिकनिक हुई है. ठीक है, ये आपकी सिंपल स्टेटमेंट. एंड they didn't have a party, उन्होंने पार्टी नहीं की.
डिड नॉट आपकी बेसिकली एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई. Now this is an exercise of past simple tense which you have to complete and then you have to submit this. जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं आफ्टर द लेक्चर तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ आपके नॉलेज में भी इजाफा करती है और ये चीज़ रिफ्लेक्ट करती है कि आपको कितनी चीज़ें याद हो गई हैं या कितनी चीज़ें इज अंडरस्टूड बाय यू. Coming towards the next one, past continuous tense और past progressive tense. इसको आप continuous tense भी कह सकते हैं और इसको आप progressive tense भी कह सकते हैं. I was watching TV when she called. मैं टीवी देख रही थी जब उसने मुझे कॉल किया. Now, use of past continuous tense. We use the past continuous together with the simple past tense. Past continuous को हम simple past tense के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं. The past continuous refers to a longer or background action. Past continuous tense आपका किसी लंबे एक्शन को या फिर किसी बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट करता है बैकग्राउंड एक्शन को that was in progress to indicate that longer action in the past was interrupted. It means that how long was the action performed and why the action got interrupted. ठीक है. The past simple refers to a shorter action. Past simple आपके shorter action को reflect करता है that interrupted the longer action, जो कि longer action को interrupt करे और happened in the middle of it. या फिर कोई ऐसी चीज जो कि उसी के दरमियान हुई हो. John's daughter was sleeping when he called her at 8 p.m. John की daughter सो रही थी जब उसने 8 p.m. उसको कॉल किया. Action interrupt ही हुआ sleeping, sleeping and sleeping. So you can see 7 o'clock till 9 o'clock she was sleeping and then in between John called. So this is how the action got interrupted. Remember, this can be a real interruption or just an interruption in time. या तो ये रियल इंटरप्शन भी हो सकती है जो कि क्रिएटेड ना हो या फिर इन टाइम जैसे कि कोई एक्शन परफॉर्म होने ही वाला था और उसके बीच में फौरन से कोई इंटरप्शन आ जाए. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द यूज ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस टेंस to describe an action that was in progress at a specific time in the past, which I've already explained in the previous slide. जैसे कि Mary was working at 10 yesterday. Mary 10 यानी 10 बजे लास्ट कल जो है वो काम कर रही थी. To talk about an action that was in progress when second action happened. आप already कोई काम कर रहे थे उसके बीच में एक दूसरा action शुरू हो गया. I was studying when the electricity went off. मैं पढ़ रही थी जब electricity चली गई. To talk about two actions that were in progress at the same time in the past. किसी ऐसी चीज की बात करना जो दो actions एक साथ perform हो रहे हो. I was having a bath while my husband was cooking. मैं बात ले रही थी and my husband was cooking. दो actions थे एक ही same time पर different locations के ऊपर दोनों actions को perform किया जा रहा था. To give background information in a story, किसी background information देना story form में किसी चीज की. It was getting dark. I was walking down the road when I saw a strange man. ठीक है. Coming towards the last one with time expressions such as while, all, morning. अब आप इसको time expression के साथ भी अगर use करना चाहें तो आप कर सकते हैं. I was working all day. मैंने पूरे दिन बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया है. ठीक है. Now coming towards the next one, that is when and while. When को and while को आप कहाँ पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं. We use when or while in a sentence with two actions in the past. हम when and while को sentence में तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो past actions की basically जो है वो बात करनी होती है. ठीक है. When I came home, I picked up my post. जब मैं घर वापस आई तो फिर मैंने अपना पोस्ट जो है वो पिकअप कर लिया यानी कि जो भी टेलीग्राम आया था उसको पिकअप कर लिया. I was sleeping when the fire alarm went off. मैं सो रही थी जब fire alarm went off. ठीक है. I was reading a book while you were watching TV. मैं बुक पढ़ रही थी जब आप टीवी देख रहे थे. ठीक है. अब आप देख सकते हैं कि when और while को हमने सेंटेंस में कब यूज किया जब दो एक्शंस आपके एक साथ पास्ट में हो रहे थे. When the clause with when or while comes at the beginning, जब भी आपका clause आता है when के साथ या फिर while के साथ beginning में we put a comma after it. हम हमेशा उसके बाद जो है वो comma को लगाते हैं. When the phone rang, I was watching the TV. जब phone
रैंग हुआ, ठीक है, तो मैंने वॉच किया टीवी, क्योंकि दो सिचुएशंस थी, इसी वजह से हमने यहाँ के पर कॉमा लगाया है, ठीक है। आई वॉज वॉचिंग द न्यूज़ व्हेन द फोन रैंग, मैं न्यूज़ देख रही थी जब फोन रैंग हुआ, ठीक है। तो आपने देख लिया कि किस तरीके से बिगिनिंग या फिर दो सेंटेंसेस को जब आप ज्वाइन करोगे तो आप किस तरीके से उसको जो है वो इस तरह से यूटिलाइज करोगे, ठीक है। नाउ coming towards the past continuous tense. Now, when I'm talking about the past continuous tense, so you can see these are couple of formulas which are given over here. Positive, assertive में आपका positive, negative, and then interrogative, which means the questioning statement or the yes or no statements. ठीक है, जब मैं positives की बात कर रही हूँ तो उसके साथ आपका आएगा subject, सब्जेक्ट के साथ आप was and were आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद फिर वर्ब के साथ ing फॉर्म आएगी एंड देन द ऑब्जेक्ट। दिस इज हाउ आपका पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसको असर्टिव भी कहते हैं। आई वाज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, यू कैन सी आई इज योर सब्जेक्ट, was यहाँ के ऊपर हमेशा याद रखिएगा, मैंने बोला कि जब भी सिंगुलर यानी कि एक से ज्यादा की बात हो रही होती है, जैसे कि अगर आप खुद ये बोल रहे हो आई, ठीक है, तो उसके साथ ये नहीं आएगा, ठीक है। आप अगर ज्यादा की बात कर रहे हो तो उसके साथ हमेशा वर आएगा, जैसे दे वर प्लेइंग फुटबॉल, अगर दे होता एक से ज्यादा की बात थी तो फिर वहां पर आपका वर आता। आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, आई सब्जेक्ट हुआ, was हेल्पिंग वर्ब हुआ, प्लेइंग वर्ब हुआ, ing फॉर्म इसके साथ लग गई, फुटबॉल आपका जो है वो बेसिकली फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एंड देन कंडीशनल स्टेटमेंट येस्टरडे यानी कि आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि कब उसने खेला था, ठीक है। देयर आर अदर कपल ऑफ एग्जांपल्स एज वेल, सो जस्ट गो थ्रू इट बाय योरसेल्फ, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू वन ऑफ द एग्जांपल। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ अफर्मेटिव, सब्जेक्ट आएगा, was या were आएगा, बट पॉजिटिव और नेगेटिव में फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम नेगेटिव में नॉट को ऐड कर देते हैं, प्लस वर्ब ing एंड प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट प्लेइंग फुटबॉल येस्टरडे, मैं येस्टरडे फुटबॉल नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो दिस इज हाउ आपने अफर्मेटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज द इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। इंटेरोगेशन मीन्स दैट यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। इसका फॉर्मूला, क्योंकि इंटेरोगेशन में हमेशा सवाल पूछा जाता है तो आपका जो भी चीज है वो आपका सवालिया अंदाज में ही स्टार्ट होता है, ठीक है। was verb प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, was were यानी कि आपका क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपका आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की ing फॉर्म आ जाती है एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। किस तरीके से? कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्जांपल, Was I playing football yesterday? क्या मैं yesterday फुटबॉल खेल रहा था? So you can see was यहाँ के ऊपर आपका जो है वो basically आपकी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आ गई है और उसके बाद I सब्जेक्ट फॉरन उसके बाद लगा है, प्ले वर्ब है जिसके साथ हमने ing फॉर्म लगाई है, फुटबॉल आपका ऑब्जेक्ट हो गया एंड देन yesterday द कंडीशनल स्टेटमेंट, यानी कि कंडीशन के साथ आपने बता दिया कि द पर्सन इज आस्किंग कि वेदर वो खेल रहा था या नहीं खेल रहा था, ठीक है। यू कैन जस्ट रीड द रेस्ट बाय योर ओन। व्हाई एम आई एम्फसाइजिंग ऑन द फर्स्ट सेंटेंस? ताकि मैं आपको वो चीज समझा सकूं, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, WH टाइप क्वेश्चंस, यानी कि हु, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड व्हाई वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, जिसमें आपने क्या किया है, आपने यही सेम चीज है, yes or no में आप इसको कर सकते हैं, where was I playing फुटबॉल yesterday, ठीक है। अच्छा, was I playing यानी वो पूछ रहा है क्या मैं खेल रहा था, फिर वो पूछ रहा है where यानी कि मैं कहाँ पर फुटबॉल जो है वो कल खेल रहा था, ठीक है। Now use one, action was going on in past at particular time, ये एक्शन आपका पास्ट में हो रहा था एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, there is another example which is given over here of past continuous tense. I was putting on lipstick, listening to a CD, drinking coffee, making out my grocery list and checking my schedule on my Palm Pilot. So इसका जवाब जो है वो दिया गया है, जो पुलिसमैन था उसने बोला, Sorry ma'am, I thought you might be using your cell phone. अब आप ये देख सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी पास्ट की हैं, जो भी बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है,
कि बात हो रही है। ये मैंने जो एक एग्जांपल दी है ये बेसिकली कॉमिक में से एग्जांपल दी है। रिमेंबर वन थिंग, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अराउंड यू, उसमें मल्टीपल एग्जांपल्स आपको मिलेंगी इन टू डिफरेंट वेज, प्रेजेंट की भी पास्ट की भी। तो आप कॉमिक्स अगर पढ़ते हो तो डेफिनेटली दैट वुड इंक्रीज योर नॉलेज। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये सीरीज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है इन विच the girl is basically telling in series that what exactly is going on, and then the response of the policeman towards it. Now there is a worksheet which you have to complete. There are simple past tense and simple past continuous tense, so you can do it by yourself कि आपने कहाँ पर जो है वो कौन सी चीज को put in करना है इसमें, ठीक है। Now coming towards the next example, okay, so यहाँ के ऊपर ये basically आपकी worksheet है which you have to complete. We will start with past perfect tense in the next slide, right, in the next presentation. So till then I hope कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें ख़त्म और समझ आ गई होंगी बहुत अच्छे से. Still a few people are having any sort of questions, so you can ask me over there जहाँ के ऊपर we both are connected, right? And if you want to learn about the past perfect tense, so just join me in another presentation. So thank you so much everyone for listening. Till then, take care, barakallah, and Allah.